Hello students. In the continuation of the last lecture, today we'll discuss about the 1,3 disconnection. If there is no carbonyl group, then what we will do? Suppose here I have taken an example, that is position, that is amino alcohol. This amino alcohol having 1, 2, 3 disconnection relationship, and for this disconnection, this carbon nitrogen bond will be disconnected, but before that we follow FGI, functional group interconversion, and this alcohol group converts into C carbonyl group. Okay, because due to this carbonyl group, because the presence of the carbonyl group, the synthesis of CN bond is easy. Okay, but there is one important thing, that there should not be carbonyl group as aldehyde, because in presence of aldehyde there is a possibility of direct addition. Okay, so we introduce the carbonyl group by FGI and we can make the aldehyde also, but an aldehyde might danger for the direct addition. That's why we shall take this function group like ester. Okay, and the bond, carbon nitrogen bond, will be disconnected from at the relation 1,3 disconnection relation. Then we'll get the amine and this carbonyl compound. Okay, for the synthesis is very straightforward and easy. In the synthesis of this target molecule, the amine and this carbonyl compound will react and then form the carbon nitrogen bond and will be reduced by the lithium aluminum hydride. Now we will discuss about the 1,2 disconnection relationship. See, this is the example of this general example of the 1,2 disconnection. 1, 2, there is a position at one position OH group and 2 position X. X may be R2N amino group, thio group and alkoxy group, and after the disconnection we'll get the synthones like nucleophile X minus and electrophile this number 3, and the synthone, this there is a problem. The problem is what reagent will be used for this synthone number 3. So and how can we use the OH group at position 1 to make the at carbon number 2 electrophilic. So the synthone cyclize to form a 3-membered ring and that loss a proton to give the epoxide. यहाँ देखिए इस एल्कोहल, ये जो सिंथोन है, पॉजिटिव चार्ज जो सिंथोन है, उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर ये रिंग का साइक्लाइजेशन होता है. तो ये जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे इस कार्बन कैटायन पर. तो यहाँ पर ये साइक्लाइज होकर के आपको साइक्लाइजेशन होगा, हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा एंड देन वील गेट द इपोक्साइड. ठीक है, देन द इपोक्साइड, वी नो द epoxides are strained ether and it will be react with any amine. The amine will react with this electrophile at this carbon atom
and then the bonding electron moves to oxygen. So then we'll get the number 6 molecule, and after that, after the removal and addition of the proton, then we will get the amino alcohol or target molecule number 1. एंड हाँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यदि सब्स्टिट्यूएंट हो, इफ देर इज ए सब्स्टिट्यूएंट at the end of the molecule number 1 and 3, there is 2 type of molecule number 1 and 3. These are the target molecule. Okay, after the 1-2 disconnection, we will get this second number of molecule as epoxide and second number of molecule as epoxide. So from both molecule number 1 and 3 will get the same epoxide. But after the nucleophile attack, after the nucleophile attack, we'll get the only third number of target molecule. So from this way, it will, this nucleophile attack from the less will get the less hindered site, or so third number is target molecule will be obtained, right? And if there is carbonyl group at position number 1, then we'll get the synthone X minus and this carbonyl cation. This disconnection gives different synthones at carbonyl oxidation level, and the best reagent are alpha halo carbonyl compounds, because यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के डिफरेंट सिंथोन मिलेंगे. तो इसमें ये जो सिंथोन है, इसका जो रिएजेंट है, इस कार्बोनिल जो कैटायन है, इसका जो रिएजेंट है ये अल्फा हेलो मतलब अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड होगा. वो जो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा उसके 2 रीजन होते हैं. एक तो होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप का SN2 डिस्प्ले, कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा SN2 डिस्प्लेसमेंट होता है हैलाइड का. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, कार्बोनिल ग्रुप मेक्स द SN2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हैलाइड फास्टर. एंड सेकंड होता है जो अल्फा हेलो कंपाउंड्स है आर मेड फ्रॉम कीटोन बाय द एसिड कैटालाइज हेलोजिनेशन ऑफ इनोल. तो इसमें देखिए यहाँ पर जो इनोल्स हैं, कीटोन का एसिड की प्रेजेंस में ये इनोल बनेगा. इनोल से इनोल का एसिड और एसिड कैटालाइज और ब्रोमीन की प्रेजेंस में अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है. तो ये इसके लिए बेस्ट रिएजेंट होता है, रिलायबल होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इसका जो असाइनमेंट है आई विल सेंड टू यू टुडे. नेक्स्ट है 1-1 डिस्कनेक्शन रिलेशनशिप. अब देखिए, एक ही कार्बन एटम पर यदि 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसमें 1-1 डिस्कनेक्शन रिलेशनशिप होगा. तो ऐसे एग्जांपल्स हम जानते हैं जो कि एसिटल हैं. एसिटल्स में क्या है, एक कार्बन पर 2, एक कार्बन पर एक OR ग्रुप, 2 OR ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, तो इसका जो सिंथेसिस होता है वो आपके जो एल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड विल बी रिएक्टेड विद द methanol in presence of acid, then it will get the acetals. For the analysis, these one at position 1-1 both bond carbon oxygen bond will be disconnected, and these are the reagents. So the disconnection of both CO bond means 2 heteroatoms joined to the same carbon atom are at the oxygen at the carbonyl oxidation level, right? For the synthesis of the acetals, see that there is a synthesis. This aldehyde group, this aldehyde molecule react with the methanol in presence of acid, then hemiacetal will be formed. After the formation of the hemiacetal in presence of acid, there is a
protonation of the hemiacetal, right? After the protonation, expulsion of the water molecule take place, and there is a addition of the second molecule of methanol, then we'll get the acetal molecule. Okay, so this chapter is complete. Now in the next lecture we will discuss about the reversal of the polarity cycle.